इधर गुवाहाटी स्थित उद्याचल में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ज्यादा चंद्रनाथ मेमोरियल ट्रस्ट और स्किल डेवलपमेंट मिशन के उद्योग से प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। उद्याचल के विद्यार्थियों को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चरणबद्ध तरीके से अन्य चीजों के निर्माण का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की सीएमडी रिनिकी भुइयां शर्मा ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम बच्चे अगर इस तरह का प्रशिक्षण लेते हैं तो भविष्य में उन्हें उद्यमिता या कौशल से जुड़े काम में अपने को प्रतिष्ठित करने में सहायता मिलेगी। The Udayachal was in existence for quite a long time, but here we have started with basically the PWD, physically disabled. But right now, since we always work for the disabled, not we won't say disabled, we say that specially able children. So now we are coming in a new zone of where we are getting into the BPL categories, where it will be a way of enhancing, or will be a vocational training, so where there will be a lot of scope for employment, and that too on the basis of entrepreneurship or on the skill based working. आज प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट मिशन के निदेशक आनंद प्रकाश तिवारी, जीएमसीएच के अधीक्षक अभिजीत शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि ये कार्य चुनौतीपूर्ण है, इसके लिए अलग तरह की आधारभूत संरचना और ज्ञान की जरूरत है। Giving training to PWD, it's a bit challenging because it's require a different kind of infrastructure, understanding, knowledge, etc. And this is a very noble initiative, and I feel that this challenging work will be done in a very, very brilliant manner by this Udayachal team. And I have seen children also and their performance and their enthusiasm. I am sure that they are going to touch the sky. No, that I see. If you will see, there is a separate sector skill council for especially abled people, and Government of India have taken so many experts from these fields, from this field, to design the course curriculum and to design everything. They have designed course curriculum, they have designed infra, they have chalked out requirement, and accordingly we are implementing. Wherever we will get that something may be added, there is a system that we may inform to the Government of India Sector Skill Council, which is doing all the research and innovation on PWD, because that is PWD Sector Skill Council, and accordingly they will change it or modify it or may add something. So this is a system where everyone is working, and on the basis of the given design and infra we are working here. If something will be needed, definitely it will be added. उल्लेखनीय है कि उद्याचल एक मल्टी स्पेशलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर और आवासीय फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन सेंटर है।